Good morning students, welcome back to the class 8 lecture of SS. Today we will start our new chapter which is considered as earlier by the madam. Today I am going with the same chapter of politics as a revision work. Today we will see the chapter considering as the Indian Constitution as revision. I will go with the summarized manner way. You have to see the video earlier which has been sent by madam. If any doubt occurs, you can contact with the helpline services and then you will reply back your doubt with your specific name itself. Today we will start our chapter, what is the Indian Constitution. Why Constitution is important for a country. So first thing you should know rules about rules. What is rules? So today I have started with the rules. First point I have mentioned, rules are formed in the country. Yes, the group of people comes together and they frame a rule for the benefits of the common people. Next part is in modern nations available as written form known as constitution. The rules which are been written in the written form, they have to write in a proper way. In a systematic way, it is considered as constitution. This constitution is consist of all the common people, whether it is caste, religious, gender. Every individual is equal. By this, the constitution are prepared. No one gets injustice. Everyone has a justice form. Today's modern method is to write the constitution in a particular book. It is considered as a written form. Next, I have written constitution also helps in understanding what is right and what is wrong. Ultimately, because of constitution, you have set a rule. In that, we can judge whether the people or whether the government is doing the right or wrong thing. We can judge very quickly with the help of constitution that the person is doing the right work or wrong work. As we can go with the rules. So we'll start our topic from now on. Why a need of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है या हर गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना पड़ता है. अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है. इन दिस बॉक्स आई हैव रिटन ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ऑल द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक. इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ. हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्रीज जिनमें डेमोक्रेसी नहीं होती, आज़ादी नहीं होती. इन द केस ऑफ आई वुड से दैट नेपाल का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. तो नेपाल में क्या था, 2007 तक तो वहाँ पे एक मोनार्क रूल चलता था. 2007 के बाद में वो चेंज होकर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. सऊदी अरब के अंदर भी किंग है, आज भी किंग चलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर भी है, रूल्स फॉर एवरी कॉमन पीपल. बट इंडिया doesn't have any ruler. But in India, the democracy is given by the government. Government has to work according to the constitution. Every individual has to work according to constitution. So this point has been mentioned that the democratic nation have constitution. All democratic जितने भी देशों के अंदर लड़ाई हुई और आज़ाद हुए जो देश, उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर बना है. लेकिन बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है. तो यही पॉइंट आपको फ्रेम किया है. अब इंडिया के अंदर जो हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर आज़ादी जब हुई या आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी उसके अंदर सबसे पहला जो डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो साल था 1934. In 1934, a demand of constituent assembly arised. 1934 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. इंडियन पीपल वर डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड गेन मोमेंटम इन द ईयर डिसम्बर 1946. और यही जो डिमांड थी वो डिमांड इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि वो डिमांड फुलफिल हुई नियर अबाउट 12 years आफ्टर. In 1946 दिसंबर में ये डिमांड
के ऊपर मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड होने लगा। जब स्पीड होने लगा उनको मौका मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना शुरू हुआ तो वो ड्राफ्टेड हुआ नवंबर 1949 में। 1949 और दिसंबर 1946 के बीच में 3 years का गैप था। इन 3 years many people, near about more than 300 people take 3 hours and discussed all the matters which have to be fulfilled in the constitution. They have prepared the constitution to look out every aspect of India. इंडिया के अंदर जितने भी एस्पेक्ट थे, जितने भी सारी चीज़ें थी, वो सबके ऊपर उन्होंने नज़र रखी, और नज़र रखने के बाद में उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने लैंग्वेज, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर इक्वालिटी, फिर लोअर कास्ट पीपल, अपर कास्ट पीपल, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज, हर एक फैक्टर को ध्यान से देखा। वुमेन्स इम्पोर्टेंस, मेन्स इम्पोर्टेंस, वुमेन्स इक्वालिटी, हर एक टर्म को उन्होंने बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसके ऊपर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, जो ड्राफ्ट हुआ था नवंबर 1949 में। On board, I have written some key feature points where it has been concluded why the constitution is needed. Going with the one point, ideals of nations where we plan to live. Constitution is the part where we decide, or we have certain ideologies in our constitution where common people lives. In example, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही इंडिया में रहते हैं। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हमारे पास राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, ऐसे बहुत सारे राइट्स हमारे पास है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, तो साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पास है। तो उसी बेस पे यहाँ पे आइडियल फॉर नेशन वेयर वी प्लान टू लिव, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल पार्ट हो जाता है हमारे लिए, और जो इंडिया में रहता है उन लोगों के लिए। एक्सप्लेन फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, आप कैसे रहते हो, सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सब कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सीखने मिल जाता है। सेट द रूल्स एंड प्रिंसिपल एग्रीड बाय ऑल पीपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन सबको ही फॉलो करना है, और सबको उसको सुनना भी है और समझना भी है और उसको अप्लाई भी करना है। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है, उसके अंदर जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनते हैं, वो सारे के सारे कॉमन पीपल एग्रीड करते हैं, या कॉमन पीपल उसको फॉलो करना चाहते हैं। एक्सप्लेन नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से हमारा फ्रेम होता है ना, उसी से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी जज किया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, वो भी आइडेंटिफाई होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। लॉ लेज रूल्स एंड टू गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को हेल्प मिलती है कि मिसयूज ऑफ पावर ना कर पाए कोई कॉमन पीपल। अगर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, स्कूल के अंदर 2 मॉनिटर हैं, एक मॉनिटर बहुत ज़्यादा एरेगेंट है और दूसरा बहुत ही पोलाइट एंड सिंसियर है। एरेगेंट जो होता है वो नॉर्मली दूसरे को टीज करता है, और टीचर को फिर बाद में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है या रॉन्ग कंप्लेन देता है। तो वो जो एरेगेंट पर्सन है या जो एरेगेंट मॉनिटर है, उसने नॉर्मली अपना पावर का मिसयूज किया। मिसयूज इसलिए किया क्योंकि उसने ऐसे पर्सन को गिल्ट साबित कर दिया जिसने कुछ किया भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि कोई बंदा अपना हमें पावर का मिसयूज ना कर सके। अगर ऐसा कोई करता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट पार्ट इज गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल ट्रीट करता है सबको, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल राइट टू स्टे इन दिस कंट्री। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7, checks if dominant group is not using power against a less dominant group। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ, इट इज़ अ मिक्स्ड क्लास ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 10 गर्ल्स है और दूसरी साइड में जो है 20 बॉयज़ है। तो इसमें क्या होता है कि मोर डोमिनेंट जो ग्रुप है वो होता है बॉयज़ का,
या गर्ल्स का बहुत लेस ग्रुप है, तो बॉयज जो बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, बिकॉज मेजॉरिटी मेन कॉन्सेप्ट चलता है। या इसको फिर हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, जहाँ पे गर्ल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, बॉयज़ की बहुत कम, तो गर्ल्स जो होती हैं वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी मेन सिस्टम हर जगह चलता है, हर इंडिविजुअल के पास वोटिंग राइट है, इसलिए हर कोई अपना डिसीजन ले सकता है या अपनी बातें रख सकता है। तो यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कि इंडिविजुअल जो डोमिनेंट ग्रुप्स है, जो मैक्सिमम पीपल का ग्रुप जो है वो किसी के ऊपर डोमिनेंट ना हो जाए, तो उसको रेगुलरली चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड देयर राइट्स, चेक ऑन कम्युनिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एश्योर करता है कि मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटीज के ऊपर डोमिनेट ना रहे या उनके ऊपर ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उनके राइट्स को भी वो एनकरेज करता है और इंडिविजुअल्स को कहता है कि आप अपने राइट्स की एक्सरसाइज करते रहो। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टेकिंग दैट कुड एडवर्सली इफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। सॉरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, protect us from taking decisions that could adversely affect the society as a whole. Ultimately, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारे इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं तो बहुत बार डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, तो उस डिसीजन से बचने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है और जो इफेक्ट है वो सोसाइटी के ऊपर नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सोसाइटी को बचाने के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है। The next topic is the key features of Indian Constitution. Key features means very important point in the constitutions. We have to see this constitution's feature and then we will go with the fundamental rights. So let's start with this. Dr. Babasaheb Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. You should be concentrating on this for the one-mark objective-based question. Who is the father of Indian Constitution? The answer is Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar is the person who has taken initiative for making the Constitution finalized and go for particular norms, rules and regulations. His ideology was to make all the communities, caste, religious, people, gender come together with a particular area. There should not be discrimination for the minorities and majorities. He was concerned of unite India. Next part is Indian national movement started in 20th century. Yes, it is. In 20th century, the Indian national movement has started and it gains the power in the year December 1946. And then they started preparing constitution, and then near about 300 people, more than 300 people come together. For 3 years they have planned according to the needs and they have seen the advantages and disadvantages of the policies and they have framed the policies in it. Time spent to plan and imagine what free India would be like, everyone to be treated equally and allowed participation in governance. Babasaheb Ambedkar. Babasaheb Ambedkar ultimately thinks about spending huge plans and time for the benefit of free India. He thinks that once the India gets freedom, the common people will have a treatment as an equal. Every individual get equal treatment, and then he says that in our constitution, every individual has a right to participate in government policies or government terms. In governance, they can go for the participation also. Now we will see the actual features which are being said by the Babasaheb Ambedkar in the constitution. So, the first point is federalism. I have written over there, more than one level of government means every government form in terms of local, state and central has an benefits in terms of making decision in terms of making benefits to the common people.
So while they make a policy with the help of each other, now I would say the certain point you should understand very clearly. More than one level of government, local, state and central, while each state enjoys autonomy in terms of power subject to the national concern required, that all states follow central government laws, also state as an agent for central government. The point which I have orally communicated, it is not been mentioned over here, but it is clearly said that the central government who makes the laws and regulations, they have to be followed by the state, and state makes them follow by the local ones. The central law is ultimately making laws, rules and regulations over here, whereas state performs as an agent. State performs as an agent, they guide the central government what to do and what not to do, but ultimately the decisions are made by central government. The next point is parliamentary form of government. In this I have written clearly, it guarantees right to vote to all the citizens. इस पॉइंट में ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम हर एक इंडिविजुअल को वोटिंग की पोजीशन दे सकते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू वोट इन इंडिया. He has a right to choose his respective representative. Once he elects a representative's duty is to perform all the functions which has been framed in Constitution. He has to make rules and regulations to stable the environment. The government has to be performed by the Prime Minister. Prime Minister has to make all the fundamental duties to be revised, and it has to be worked properly to control our environment. There should not be a conflict, there should not be any problem. But the framing has to be in the favor of common people. Individual has a right to vote, so he can decide who has to be elected or who has not to be elected. Next part is separation of power. In this point I have written, each organ performs different functions and regularly check another organs to maintain the balance between them. Separation of power has been divided into three parts. One is execution, second is judiciary, third is legislature. In that, I would suggest that every department is working simultaneously, equally काम करते हैं और एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं. कोऑर्डिनेशन रखने का मकसद ये है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो जाए, झगड़ा स्टार्ट ना हो जाए, और ये भी रेगुलर इंटरवल में चेक करते रहते हैं कि जो पॉलिसीज को बना रहे हैं या कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आ रहा है वो सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा. Execution means implementation of law and running government. Next point is judiciary. Judiciary is all level of courts in Supreme Court, High Court or District Court who takes the decision, and they are the separate ones from the government. Legislators are the ones who are elected representatives who are being given duties on the behalf of common people. He takes decision on the behalf of people. Point 4. Fundamental rights. This is the fourth key feature we will study right now. It refers as four signs of Indian Constitution: guard against misuse of state power, protect citizens against arbitrary and absolute power. This fundamental right is very important for every individual in Indian Constitution. This fundamental right helps us to protect our rights. They give a safeguard to us from the misuse of power for any state power. State cannot be making you pressurized for making the decision in favor of them. Next part is related to protect citizens against arbitrary and absolute power. Our fundamental rights has been given different rights, like how we can speak directly, freely, move from one place to another, we can choose our religious. No other government or any employee or any member has no right to make your decision forcefully.
Next part is secularism. I have written over here, officially does not promote specific religions by the government. No government has a right to promote a specific religion. If they do that, they are not following the fundamental key features of Indian Constitution. Ultimately, in secularism, every caste, every religious, every form has to be treated equally. So government should not promote any single religion. If they do that, the other religions will get hurt and then they will be treated very badly. So in next lecture we will do fundamental rights and then some revision questions will be provided on the board with a smart class. Thank you.